to my channel Day 3 in न्यूयॉर्क सिटी। आज हम लोग न्यूयॉर्क से नाइगरा जा रहे हैं, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए होटल से। अभी हम लोग बस स्टॉप में आ गए हैं, यहाँ से बस उतरेंगे और फिर वेट करना है बस के लिए। हम लोग अभी कॉर्निंग ग्लास म्यूज़ियम जा रहे हैं। पहले टिकट ले लेते हैं, सब जगह में टिकट मैंडेटरी है यहाँ पे। पहले टिकट्स ले लेते हैं। यहाँ से अभी से हैलोवीन पार्टी के लिए स्टार्ट हो गया सब कुछ। ये सब हैलोवीन पार्टी डेकोरेशंस है। थोड़ा पास से देखते हैं ये सब। बाप रे, $86, बहुत ही ज़्यादा प्राइस है। इतना छोटू सा है, इसका भी $35। जगह बहुत सुंदर है ये म्यूज़ियम। ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर आ गए। यहाँ पे भी देखेंगे सब कुछ। नीचे वाला फ्लोर बाकी है अभी देखना, पहले ऊपर वाला फ्लोर देख लेते हैं। पैटर्न डिज़ाइन, यहाँ प्लेट्स बने हुए हैं सारे। यहाँ प्रोसेस दिखाया जा रहा है पार्ट बाय पार्ट, कैसे कैसे प्लेट्स बनते हैं। फिर क्वालिटी टेस्टिंग भी होता है इसका। और यहाँ पे शेप डिज़ाइन है प्लेट्स के, बहुत सारे डिफरेंट शेप्स आए। अभी हम लोग और एक जगह जा रहे हैं। क्या है यहाँ पर देखते हैं हम लोग अभी। A big round of applause. Yeah, no one. Thanks for that. My name is Chris. I'm going to give her a hand. I'm going to talk you folks through the process as well. Has anybody here seen glass blowing before? I'm just curious. Okay.
Not too many folks. Well, if you have any questions, shoot that hand right up and I'll answer it as we work. We can save it to the end. It's kind of the consistency of granulated sugar. So when we take a molten gather of clear glass held at 2,100 degrees and you roll through, this heats up. Hot glass sticks to itself. So it's a pretty fast. Reichenbach uses that factory. So we order a color online. We just type in 210, 5 kilos, 10 kilos. They ship it to us. But it doesn't matter what color we have, blue, green, pink, purple, brown, they all look bright orange at this stage. And that's a foundation that we're gonna build on. So let's open this door all the way for a moment. Can you feel the heat? Raise your hand if you do, I'm just curious. Even up in the back. Or it's getting cold. Cold glass for us is 1,000 degrees. That's where this type of glass is rock solid. So it's just a term that we use, cold or cool. But here we go, wine's on a fresh gather. She's going to cradle that into a wet wooden scoop called a block and get some even distribution. This is a really good starting point. She's cooling the pipe there a little bit. Now, generally speaking, these pipes and the rods that we work with, they're stainless steel, not a good conductor of heat. So you can see where it's dark and tarnished. But the system for inflation is regulated and set right now to about 1.5 pounds of pressure. Barely anything. This air gun is much higher. This is probably set to 44.25%. Just kidding. But anyway, that's a higher pressure, and that's just used to cool the glass very quickly or step through very efficiently, bringing us high-speed information, internet, all over the world. But Jamie's got about 15 years of experience. I didn't mention that at the start, but when you watch her working, if you take note of her left hand every now and then, that's muscle memory. Beginners don't have that, and they struggle with that. If you don't have that, it's really hard to keep the glass on center and even on the end of the blowpipe. But with this much skill and reinforcing it, the tighter that line is, the better off we're going to be. And that's why she puts a lot of effort into maintaining that properly. Transparent. What would you like, a stem? Okay, so we're going to add a couple gathers of glass to make the middle, and then there's a lot that you can do, but certainly limitations. So usually teams of 2 or 3. Okay, so we spool that fresh gather on. Jamie's going to center it on the tip of the bubble using the head of the jacks, and then for the foot when the time is right. So let's talk a little bit about the glass itself. What's glass made of? What's the main ingredient? Sand, yep, silica sand. Soda ash and limestone, you mix to batch. So I mentioned a couple hundred companies that we buy from. That's teal blue, the fuchsias, the pinks, the rubies come from gold, which makes them one of the more costly colors of the bunch. It's actually 2 pieces of fruit wood hinged together. And it's important that they're soaked in water. If you want to shake glass this hot with wood, the wood has to be soaked. The water turns to steam, and that's what's preventing the tool from sticking to the glass. The foot, I'm helping to maintain just a level bottom on the edge here. She's profiling a little bit of glass shaped up on a solid rod. I'll bring this over to her in a moment, and she'll attach this to the foot. I can hear it. We can't look at the glass and tell the exact temp at any given point, but you get a pretty good feel for it. So she places the puntee on the foot, centers things up, and once this connection is established, she can produce a little controlled stress. That's a nice camera shot right there. All right, so a drop or 2 of water placed on that constriction, that forces tiny cracks to form, just on that one spot. And a quick tap on that pipe at the right moment does the rest. Let's give her another round of applause. That was nicely done. It's a different story when you're a beginner. That's where you usually lose the pieces. So this type of glass, I mentioned it, and it was sent out to Mount Palomar in California. It is the disc that became the giant mirror to collect light and use for their observatory, Mount Palomar Observatory. But Jamie's flipped this around, she's reintroduced the heat, she just inflated a little bit further. Every time you inflate the bubble, it thins it. It gets thinner and thinner, so it starts to stiffen up a little bit faster, yet again. Many trips back and forth in the oven. In the end, but not just yet. But these blues are really good at showing that radiant glow. Especially during the daytime like this, the blues really do translate that infrared heat so well visually. Now I know the final shape that she's going for, and this will be probably the most dramatic change to this piece. Wait for it, wait for it. Look at that. What do y'all think of that? That was a pretty sweet move.
I like that because it shows you how quickly that glass stiffens up. The time to work the material when it gets thin is so short. तो आप लोगों ने देखा ये लोग कांच के बर्तन कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनाया है ये लोग। अभी देखते हैं सर नीचे ग्राउंड फ्लोर में क्या है, ये भी बहुत सुंदर है। ये भी पूरा कांच से बना हुआ है। वार्निंग ग्लास मिरर, ये नॉर्मल स्टिकर है। सो टू कंटेम्पररी आर्ट प्लस डिज़ाइन। तो नीचे चलते हैं, अब नीचे चलकर देखते हैं बाकी सब कुछ। नीचे पूरा शॉप भरा भरा हुआ है कांच के चीज़ों से, जो भी है यहाँ पे सब ग्लास है, सब ग्लास, बहुत सारा चीज़ है। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं, बिकॉज हम लोग के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, बस यहाँ पे आधा घंटा रुकने वाला है सर। यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े भी है, कुछ खाना है तो यहाँ से हम लोग खाना भी ले सकते हैं। कुछ कैफ़े एंटर है, पहले एक बार कैफ़े देख लेते हैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए, जल्दी जल्दी कुछ ड्रिंक्स और कुछ सामान उठा लेती हूँ मैं भी। ये सब ग्लास के ऊपर पेंट किया हुआ है। मेड इन यूएस, सब कुछ यहीं पे ये सब रेडी होता है। वाओ, यहाँ पे देखिए बॉल ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर वहाँ से होके ये बॉल, येलो कलर का बॉल शायद आपको दिख रहा है, वापस यहाँ पे आ गया ये बॉल और फिर वो ऊपर जा रहा है। बहुत बड़ा शॉप है ये। ये सब सोपीस है, मेड लोकली की, सब कुछ यहीं पे रेडी होता है, ये सारा चीज़ जो भी है। बस ये एक पाइप $30 है। यहाँ पे जो कुछ भी है ये सारे $35 के हैं सारा। ये जो कुछ भी दिख रहा है ये सारा कांच का है, सारा। यहाँ पे मैग्नेट है बहुत सारे, मैं कहीं भी जाती हूँ मैग्नेट ज़रूर कलेक्ट करती हूँ। तो मैंने एक मैग्नेट पिक कर लिया और देखते हैं यहाँ से क्या क्या ले सकते हैं। बहुत हेवी है ये सब। यहाँ पे टाई है, टी शर्ट्स है,
आप तो कहीं पे भी जाओ टी शर्ट्स कॉमन है, मिलेगा ही मिलेगा आपको। ये सब सेल प्राइस में है, वो भी $50। $15 में कुछ मिलेगा नहीं, डोंट वरी, जो भी लिखा हुआ है एक सामान रहेगा शायद। ये सब ग्लास देख रहे हो आप, ये $40 करके है। और ये जो महान व्यक्ति है, इन्होंने ये सब ग्लासेस बनाए हैं। ये सब छोटा छोटा जो ग्लासेस है, इसमें से कोई $15, कोई $40 है। यहाँ पे भी मैग्नेट है, ये सब $8 करके, 7.99 सेंट। बुक्स भी है यहाँ पे। यहाँ का डेकोरेशन ही इतना अच्छा लग रहा है। डोंट वरी, इसका प्राइस है $5,400। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हो इसका प्राइस है कितना। इसका प्राइस है $7,500। मतलब नायग्रा जाने से पहले हम लोग ये कॉर्निंग म्यूज़ियम आए, तो ये सच में देखने लायक है। और वीडियो में थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको दिखाया ये लोग कैसे ग्लास रेडी करते हैं यहाँ पे। वाह, ये क्या है? इसका प्राइस है $5,000। $90। चलो, प्लेट्स भी कितने अच्छे, इसका प्राइस क्या है? $82 एक प्लेट का प्राइस है यहाँ पे। ये एक्वेरियम बनाया हुआ है पूरा। एक्वेरियम के बहुत सारे साइज है, छोटे बड़े। इसका प्राइस $320। इस छोटू का प्राइस क्या है? $99। इतना छोटा सा। नेक पीसेस भी है यहाँ पे। यहाँ से देखते हैं। ये इयररिंग्स $40 एक इयररिंग्स। और नेक पीसेस जो भी है बीड्स और ग्लास से बना हुआ है, ये नेक पीसेस 128, सारे हैं 128। बैग्स भी है यहाँ पे। वाह, $80। इस इयररिंग का प्राइस लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे।
इस ईयर रिंग्स का प्राइस है $40। चलिए अब मैं अपने लिए भी कुछ देख लूँ सामान, बिकॉज टाइम जा रहा है, ज़्यादा टाइम है नहीं। सॉरी, धक्का लग गया दूसरे को, यहाँ पे पिटाई हो जाएगी मेरी तो आज। इसका $75 है बस। चलो भाई जल्दी से देखो अपना सामान और जल्दी पड़ो यहाँ से, नहीं तो बस वाले मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। ये सब सस्ते हैं $15। वाव, ये इसमें सुंदर लग रहा है। सिर्फ $205, सिर्फ हम लोग म्यूजियम से निकल गए, अभी नेक्स्ट स्पॉट जा रहे हैं। वो रहा मेरा बस, चले।